Bismillahirrahmanirrahim. A very good afternoon and Assalamu alaikum to all the participants. I appreciate your presence here. These are very testing times. Corona is widespread, and the good aspect of today's lecture is that this would be online, and a lot of people would be benefiting from this lecture and discussion by sitting safe in their respective homes and can watch the lecture online. I would like to appreciate and commend the efforts of Kanundan team and these initiatives back to back in an effort and in an attempt to improve and ameliorate the standards of criminal litigation, criminal advocacy in the courts. This is indeed a step in the right direction. I am, as some of you know, a criminal practitioner, and I am mostly, I do my work in the appellate courts. This is the High Courts of Pakistan and the Supreme Court of Pakistan. And today's lecture revolves around criminal appeals. The scope of lecture would cover appeal against convictions and appeal against acquittals. We will be talking about both of them. But at the very outset, let me clarify something for the young lawyers. 2 hours lecture or discussion is wholly inadequate to understand the dynamics and the intricacies involved in criminal appeals. This 2 hours lecture is by no way a substitute or replacement for proper mentorship, proper pupillage, which would give you a proper insight and would fully equip you with all the ups and downs which one experiences during his career. So I would strongly recommend and urge all the listeners today that they must try their utmost to secure pupillage, to secure a placement in a chamber which specializes in criminal appeals. This is of paramount importance for the reason that when you are arguing a criminal appeal, you are engaging the bench or the judges for longer duration. You're not arguing a small brief, or a brief which you are over and done with in 2 to 3 minutes. So your knowledge, your command, your grasp, your insight in the field of criminal law would be properly tested during appeals. So this is also a golden opportunity for the debutants and for the young lawyers to make their name and to establish their practice by demonstrating skills. So greater opportunity to interact with the judge, more time to stand at the podium, more time to speak, more time to remove your hesitations and inhibitions, and to engage the bench for longer duration. But of course, this comes at a price, and the price which you have to pay is that you must know the work. And the work, of course, is not only challenging, the work which is given to you has high stakes. So people come to appellate court lawyers with a lot of apprehensions, with a lot of insecurities, and they make it a point that they do not make another mistake because they are convinced. A person who approaches the High Court, whether his loved one or his relative, whoever is in trouble with law, whether he's involved or not, he doesn't care about it. He would only like to hold the lawyer responsible who has appeared in the lower court. That this result is because of lack of
hard work or lack of professionalism or whatever you may name it or label it, and he's looking for relief in the High Court from you. So it is very important that when you interact, मैं जो आज का lecture है वो directly I would not like to take you to the court. I would first of all give you an insight as to what happens when a client comes. Usually from experience, I have 20 years of experience of arguing criminal appeals, and I have argued over 2,000 appeals so far. So I do have a fair idea as to how, what are the various steps. And one of the most important step where I say pupillage and mentorship is very important is when a client enters your chamber and your office and he places his file before you and asks for preliminary opinion or your assessment or evaluation of the file. That is very important stage. And during that 15, 20 minutes or 30 minutes, you are under microscope of the client. And I have observed that they never come alone, they always come in a group when they are selecting lawyers. And they are doing their window shopping of lawyers. One of them would speak and two would silently observe whatever the lawyer says. And they are quite familiar and acquainted with the circumstances of the case. Since they have been to the trial court and since they have been through the investigation, they have a fair idea what the case is all about. So your opinion and your assessment is very important when a file is placed before you. So my suggestion and recommendation to you would be that whenever you form an opinion, you must examine two documents. There is no need to go through the entire file. This practice I would not encourage that. I would only recommend that you go through the first information report and the trial court judgment. Trial court judgment includes the facts, it includes the prosecution evidence. Most of the times it includes the arguments for the complainant. Most of the time it includes arguments for the defense. And then the crucial paragraphs start with reasoning assigned by the trial judge as to why he has awarded conviction and why he is punished. So you must do a quick assessment of the file in those 15 to 20 minutes and form an opinion as to what you would say. So take half an hour, examine the file, assess the file, make your notes. And those notes are very important because that gives you an opportunity to critically analyze and evaluate the trial court judgment. All the flaws, all the dents, all the shortcomings, they would be evident to you if you are carefully reading the trial court judgment and then give your very honest and very fair opinion to the client. This is very important. Abstain and refrain from giving assurances and guarantees. Try to build your image without giving guarantees. You may use the word probabilities, that there is a high probability, there is a high likelihood that this would be the outcome. And you must give fair advice. I have been giving very fair advice to clients whoever approach me, and with the passage of time you develop a reputation that if you want to hear the truth and if you want to hear what is the realistic probability of your appeal, so you go to such and such lawyers. So your reputation travels fast, and it is very important that when you give your advice, give sincere and complete advice, whatever is in the best interest of your client. So that is the stage. Difficulties, they arise when, client places the file before you and he has filed a jail appeal, or he has filed a very simple
draft prepared or executed by a professional stenographer, which are readily available in the market. They would just change the name of the appellant and the grounds would be the same, and you get the draft. So the appeal which is filed never gives you an indication or an idea what the case is all about. There is no concept of drafting. Drafting is simply disappearing from criminal litigation. Even in bail applications, I have noticed that. But today I would not comment on bail applications. I would confine today's lecture to appeals only. So whenever I see an appeal, I have hardly seen a draft which contains or which carries grounds on which conviction or sentence is being challenged before the High Court. So I would strongly recommend that when a client approaches you within the limitation period, please draft proper appeal containing the correct grounds on which you are challenging the decision. This is very important, because if you do that, lawyer would simply go through the appeal and would make up his mind whether there are merits in the appeal or not, whether he should accept the brief or not. So in short, the prevalent practice is that when you are approached for an appeal, the matter is ripe, rather overripe, for arguments in the court. It is ready. And parties wait till the very end to engage accounts. They would perhaps only give you a week. The file would be ready. The judge must have already taken up the appeal and is not inclined to grant an adjournment, and you are under pressure to appear in the court well prepared to make your submissions. So appeal का जो contact है with lawyers, वो दो stages पर है in Pakistan. The first stage is when the family or the appellant challenges the conviction, and he challenges it through any lawyer and files an appeal, which is not a professional appeal, which does not contain any grounds, and he files it and then he waits for 3-4 years when the matter is ripe. For instance, at the moment 2016-17 appeals are being argued. We are in 2021. So the clients, all those clients and all the parties, who were convicted back in 2017 are now vigilant and are now careful that their appeals would be taken any day, any moment by any judge. So one way of dealing with this situation is, and there's absolutely no harm, and make a note of this point very, very carefully. You can always file a new appeal along with the already filed appeal containing the grounds. And the reason is, you are officially placing on record your written submissions. There is no other way that your submissions can come on the record other than your grounds, other than the draft. So I have seen it, some lawyers filing second appeal on jail appeal, because the second appeal contains proper grounds, and it is an indirect and a very tactful way of bringing your submissions on the record, and those submissions can remain on the file till Supreme Court, till review. Let me tell you why. Lately, I have seen in 20 decisions in 2020 where, the honorable judges of the High Court have written down that these are the submissions of the counsel in support of this appeal, A, B, C, D, E. And those submissions are the submissions which are mentioned in the appeal. So your assistance in the court is not incorporated sometimes in the final order, but your appeal and your grounds are there, so you can always agitate this point. So drafting has enormous importance even in criminal appeals, but this over a period of time
The prevalent practice, which I would condemn and would not appreciate, is not to file a proper appeal. So appeals have to be properly filed, they have to be properly worded, or मैं हमेशा I recommend and suggest in every case, they are always, or in every bail application or in every appeal, they are always between 3 to 5 main points. Put your case in ground A, B, C, D, and maximum E. Go no further than that. So explain your case properly in A, B, C, D. Your A, B, C, D has to be most convincing. Do not write jurisprudence, do not mention philosophy, because judges would only go to your prayer, and maybe if they get a feel that this lawyer has written something in the draft, they would read ground A, B, C, D. So put your case always in A, B, C, D, and you will reap the benefits of, because judges most of the time make up their minds the night before, and they are convinced and persuaded the night before if your grounds contain, why are you seeking the relief. So the first decision which a lawyer must make is, with all honesty, should he accept the appeal or should he not? If he accepts the appeal, be very honest in your advice and tell the clients what is the probability of acquittal, what is the probability of mitigation, reduction in sentence, or if it's a borderline case, it may result in conviction, it may result in an acquittal. Give that advice as well. And if you feel that the evidence is exceptionally strong and overwhelming against the accused, convey to your client that this case is very strong and you don't think that there is any probability of result. I must share this with you. For instance, for example, if I have argued 10 cases, out of 10 cases I have got the desired relief in 8 or 9. And the reason is that I first convinced myself that I have a case. मैं ही convince नहीं तो मैं presiding officer को क्या convince करूँगा कि मुझे result दें. So I have to be convinced first that this is the roadmap, this is the route, or this is my game plan to get the relief. So जो 2 cases हैं या एक case है which has not given me result, probably those are the briefs where I have worked hard the most, or have been the most memorable briefs for me, because I remember putting in extra effort in those cases where I was not getting the relief, although I thought I was convinced that I deserved relief. So 10 में से 8 केसेस में रिजल्ट मिला. अगर 1-2 में रिजल्ट नहीं मिला तो वो मेरे लिए ज़्यादा मेमोरेबल, ज़्यादा चैलेंजिंग केसेस रहे, क्योंकि शायद मैंने उनमें ज़्यादा मेहनत की या ज़्यादा एफर्ट की. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हर क्लाइंट का राइट होता है. Even if someone is caught red-handed, even he has the right to, challenge his arrest or challenge his conviction. तो मगर nevertheless आपका ओपिनियन और एडवाइस देना, दुरुस्त एडवाइस देना, वो बहुत ज़रूरी है. Because this is a reputation which you are making for yourself for the rest of your life. And let me tell you, a lawyer works as long as he is breathing. बाज़ लोगों की 60 पे रिटायरमेंट हो जाती है. मैंने देखा है वुकला, they don't give up. So as long as he is speaking, even with hearing aids, even with a stick, even with support, he comes to the court. So अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे तो बड़ी लंबी इनिंग्स होती है. So अपनी रेपुटेशन पे और क्रेडिबिलिटी पर काम करें. ये जो शॉर्ट लिव्ड थोड़ी देर की हवाएं होती हैं सियासी या इलेक्शंस की,
या झूठ बोल के या गुमराह करके क्लाइंट को, उसका फ़ायदा कोई नहीं। उससे आप एक शॉर्ट इनिंग्स तो खेल पाएंगे मगर कभी भी आप टेस्ट मैच के प्लेयर नहीं बनेंगे। और मैं आज के लेक्चर के लिए भी आपको ये कह रहा हूँ कि आज आपको सिर्फ इस लेक्चर के थ्रू जो लोग इसको सुनेंगे, और मैं कानूनदान की एक दफ़ा फिर इनको अप्रिशिएट करूँगा कि ये इनिशिएटिव इनका, आप तो यहाँ बैठे हुए लोग, ये पता नहीं कितने हज़ार लोग KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में, रिमोट एरियाज़ में, विलेजेस में लोग बैठ के ये सुनते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। आप लोगों को तो फिर लाइब्रेरी मैसर है और रोज़ एक से बढ़कर एक वकील देखने को मिल जाता है हाई कोर्ट की, जिसकी आप परफॉर्मेंस देखते हैं और वहाँ से आप चीज़ों को सीखते हैं। सो व्हेनेवर यू फाइल एन अपील, file the appeal under the correct section. If you are filing an appeal under some special law, it could be CNSA, it could be NAB, it could be anti-corruption, it could be ATA, there is always accompanying appeal provision under the statute. So do not forget to mention that or include that. Now, there are, rights have been given to the aggrieved party. Aggrieved party is not just confined to the complainant. It extends to the relatives. It extends to the family now of the legal heirs, of the victim. So, the scope is now very broad as to who can file an appeal and who is aggrieved within the meaning of criminal law. Moving forward, from right to appeal you have to, today we will be talking about सेक्शन 410, दोनों साइडों की आज बात होगी। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की बात भी होगी और अपील अगेंस्ट एक्विटल की भी बात होगी। बट द प्रिलिमिनरी असेसमेंट विच आई हैव गिवन यू, हमने उस पर कि आपने सबसे पहले तो ये फैसला करना है कि मैंने अपील एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। अपील एक्सेप्ट करके क्या एडवाइस है जो देनी है, कितनी एडवाइस है जो देनी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दिस इज़ एन आर्ट एंड दिस इज़ अ स्किल। लॉट ऑफ पीपल थिंक दे कैन लर्न लॉ और दे कैन अंडरस्टैंड लॉ विदाउट हैविंग अ प्यूपिल मास्टर। दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। अ प्यूपिल मास्टर टीचेज यू सो मैनी थिंग्स। If he permits you and allows you to remain in the room when he's dispensing or giving advice to the client, the first round, कितनी बात बतानी है, कितना मशवरा देना है, क्या मशवरा देना है, इंगेज कैसे होना है, इम्प्रेस कैसे करना है, फी कैसे कोट करनी है, कैसे लेनी है, ये किसी किताब में, मेजर एक्ट में, क्रिमिनल रेफरेंसर में ये बातें नहीं लिखी हुई। ये ऑब्जर्वेशन है। और आज का टोटल लेक्चर, बाकी भी जितनी बातें हैं, किसी एक किताब ने मेरी मदद नहीं की, ना करेगी। कहीं नहीं लिखा हुआ हाउ टू आर्ग्यू एन अपील। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि आपने अदालत में बैठ के क्या नोट किया, क्या ऑब्जर्व किया। और मैं एक बात यहाँ फिर कहता हूँ, ऑल्दो वी वेयर सूट्स, जिस पे आजकल काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू हुआ है कि ये यूनिफॉर्म जो है ये वेटर्स पहनते हैं और इसको उनको नहीं पहनने देना चाहिए। हम इस इशू में भी नहीं डलेंगे कि वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी नज़र में लिटिगेशन, अगर आपको ये कहा जाए कि कोई एक शख्स सिखाएगा तो वो गलत है। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं नेट्स में गया तो मैंने कहा क्रिकेट किसने सिखानी है? उसने कहा किसी ने नहीं सिखानी। जिस बैट्समैन का जो पसंद है उठा लो, जिस बॉलर की जो चीज़ पसंद है उठा लो। इवेंचुअली यू हैव टू वेयर अ कॉम्बिनेशन, कि ट्राउज़र कोई है, शूज़ आजकल ब्लू और ब्लैक के साथ कुछ लोग ब्राउन शूज़ भी कैरी कर लेते हैं अच्छे तरीके से, दैट इज़ पॉसिबल। सो टाई कुछ है, शर्ट कुछ है, रुमाल कुछ है, ब्लेज़र कोई है, ट्राउज़र कोई है। ख़वातीन भी जैसे दे कैरी देमसेल्फ वेरी वेल, डिफरेंट क्लोथिंग, डिफरेंट दुपट्टा और डिफरेंट कोट, बट ओवरऑल दे हैव टू कैरी इट वेल। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैंने अपनी किसी एक शख्स में इतना कहत और बोतान है इस वक्त क्वालिटी लॉयर्स का जो आपको इंस्पायर और इम्प्रेस करें इन लिटिगेशन के, किसी एक बंदे से मुकम्मल चीज़ मिलेगी नहीं। तो कहना ये चाहता हूँ जिससे जो अच्छा मिलता है उठा लो।
किसी का रुमाल अच्छा है, किसी का कोट अच्छा है, किसी की टाई अच्छी है। ओवरऑल watch variety of lawyers when you go to the court, observe them pleading, see them arguing, see them working hard, और जिसका स्टाइल इम्प्रेस करता है, जिसकी एविडेंस की प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, आप उससे वो चीज़ ज़रूर उठाएं इससे पहले कि वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाएं। मैं मरहूम एजाज बटालवी साहब से, मरहूम ख्वाजा सुल्तान साहब से, मरहूम जाहिद बुखारी साहब से, मरहूम एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, चौधरी मोहम्मद हुसैन छच्छर साहब से, मरहूम अनायतुल्लाह चीमा साहब से, वो नहीं है इस वक्त, मगर मैंने हर किसी से कोई ना कोई चीज़ जिसकी जो अच्छी लगी है वो अडॉप्ट करने की ज़रूर कोशिश की है। सो आपको सीनियर लॉ, सो ये एक मैदान है जहाँ पर आप कोर्ट में बैठते हैं, और कोर्ट में जब बैठे तो बड़ा विजिलेंट होके और केयरफुल होके बैठे हैं कि आप वहाँ पर बैठ के, अगर खुद से आपको अच्छा उस्ताद नहीं मिल सका, लेस प्रिविलेज्ड हो या अनलकी रहे हो प्यूपल मास्टर ढूंढने में, तो जो 2-3 अदालतें हैं वहाँ पर बाकायदगी से बैठे तो बड़ा फ़र्क आएगा। अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ें, नेटफ्लिक्स पे अच्छे प्रोग्राम्स देखें, BBC सुने, अपने तलफ़्फ़ुज़ को, क्योंकि व्हाट इज़ इट दैट वी आर giving to our client? Our ability to speak, our services. I can understand your case better and I can argue your case better. वरना साइल तो खुद बोलता है, उसको भी परमिशन है। Why should he hire you? He hires you because you give him the promise. I understand the law, I know the law, I would understand the facts from your file, and I would put your case in a very convincing and persuasive manner before the judges to get you the desired results. So अगर सर्विस ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तैयारी नहीं है, मेहनत ही नहीं है, अगर यही नहीं पता हाउ टू आर्ग्यू दी अपील, तो फिर फ़ायदा क्या उस बात का। तो चूँकि हमारे पास बार कोर्स नहीं है, फ़ौरन तालीम बहुत मुश्किल भी है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, तो जो कुछ लोकली अवेलेबल है उसी पर सब्र व कनात करते हुए उसी को अगर अपना लें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन कमिंग ईयर्स। इस बात को जानते हुए कि मेयार और स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं, नोज डाइव गिर रहे हैं, और हम भी जो लेक्चर दे रहे थे आज से 1.5-2 साल पहले, वो लेक्चर कुछ और थे, अब के लेक्चर कुछ और हैं, आने वाले लेक्चर शायद कुछ और हों, कि इनसे कुछ ना कुछ बिगड़े जरूर, यानी बिगड़ने से मुराद सब्र। एवरी जज हैज डिफरेंट वे एंड स्टाइल ऑफ एडजुडिकेटिंग और डीलिंग विद अपील्स। वी हैव जजेस हु वुड नॉट गिव यू more than 5 minutes to argue your appeal. If you are lucky, 10 minutes. And we have judges who would give you 1 hour and 10 minutes to argue your appeal. But you must know the judge before whom you are placed. Without knowing the judge, some judges have preference over facts. Some like it if you refer it to the law. Some would not let you proceed until and unless you are fully aware of the latest developments as to what the Honorable Supreme Court has stated in 2021. What are the latest judgments? So मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक judgment got me result in January 2021 but did not get me the same result in March 2021 because the Supreme Court changed its views in 2 months, and judges of the High Court, they keep themselves up to date, abreast with latest developments and changing laws. और एक और ट्रेंड चला है, although personally speaking, in my opinion, मैं उस ओपिनियन को मैं समझता हूँ इतना मुनासिब नहीं है कि सिर्फ रीसेंट जजमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना। 2020 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 9 शायद आप जो 1970 या 1980 की जो जजमेंट्स हैं या 50s या 60s की जजमेंट्स हैं वो मोती और कोई परो नहीं सका आज दिन तक, या वो जो बातें तब की हैं वो
आज दिन तक वो चल रही हैं। क्या वजह है कि इंग्लैंड आज भी आपको एक्टस रिया पढ़ाता है, मेंस रिया पढ़ाता है, कॉजेशन पढ़ाता है, तो 1910 का एक ही केस है जो पढ़ाता है, वो आगे ही नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं है कि 2021 में लिखने वाले नहीं हैं। सो केस लॉ को उतना डेवलप होना चाहिए और उतना ही आना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। नेसेसिटी है। कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए केस लॉ नहीं लेना कि 4 मेरे खिलाफ हैं और 4 मेरे हक में, किधर जाए। तो केस लॉ इज ऑलवेज वेरी रेलिवेंट, केस लॉ की यूटिलिटी इज वेरी, बट नोइंग दाई जज इज अ प्रिंसिपल which will get you great benefits in coming years. Without knowing the judge, उन्होंने आपको 10 मिनट सुनना है या उन्होंने आपको 1 घंटा 10 मिनट सुनना है, ये आपको नहीं पता लगेगा। ये कुछ एग्जाम्पल आपको शायद सामने लिखी हुई। हमने केस आर्ग्यू किया आबिद रज़ा, ये MNA कोटले से, तो वो केस जजेस 4 दिन सुनते रहे और 17 से 18 केस लॉ दहशत गर्दी पर चीफ जस्टिस साहब ने और मिस्टर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब थे उनके साथ, दी अदर बेंच ऑनरेबल मेंबर ऑफ द बेंच, उन्होंने 18 केस लॉज को बारीकी में सुना कि किस केस लॉ ने क्या इस्टेब्लिश किया। सो आपने केस की नब्ज पे हाथ रखना है कि इसको 18 मिनट में सुना जाएगा या 18 फैसले सुने जाएंगे। वो दूसरा केस शायद नीचे मेंशन है, खतीजा सदीकी का केस, अपील अगेंस्ट एक्विटल की तमाम केस लॉज उसके अंदर डिस्कस हुए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं अपील अगेंस्ट एक्विटल्स को हैंडल करने के लिए। तो नोइंग द जज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उनका मिजाज, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग, कितना टाइम मिलेगा, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मिसाल देता हूँ, एक जज साहब हैं, आप जाके उनको कल सुबह कहें कि सर ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी है, टाइम चाहिए, वो कहेंगे नहीं मिलेगा टाइम, अभी आर्ग्यू करोगे जो आर्ग्यू करोगे, देयर इज नो टाइम। एंड डोंट डू दैट। डोंट एक्सेप्ट अ ब्रीफ इफ यू आर मेयरली अपीयरिंग इन द कोर्ट कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी देने आया हूँ, और जब इजाज़त नहीं मिलती तो आप फाइल भी खोल लेते हो और फिर आप आर्ग्यूमेंट्स भी दे देते हो कोर्ट को और असिस्टेंस भी दे देते हो। फिर शर्म और भी ज़्यादा आती है कि केस भी तैयार है, वो जज साहब भी मुस्कुरा के आपकी असिस्टेंस ले रहे होते हैं। सो ईदर टेल योर क्लाइंट्स टू मैनेज एडजर्नमेंट्स वंस यू स्टेप इन टू द कोर्ट विद योर पावर ऑफ अटॉर्नी, डोंट सीक एडजर्नमेंट। चाहे ओवरनाइट आपको बड़ा होता है, रात बहुत होती है, 4-5 घंटे आप बैठ जाएं और अपना केस तैयार करें, तो देयर इज़ नो नीड एंड नो टाइम कि आप जाके एडजर्नमेंट। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी रेपुटेशन ऑफ कोर्स जो है वो बनती है दैट यू आर अ प्रोफेशनल लॉयर। सो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स को नहीं समझते। मैं एंड में एक बात कहूँगा, When you appear in the court in an appeal, ऑब्जेक्टिव से पहले मैं एक पॉइंट पर आपको ले जाना चाहता हूँ, नो दाई जज से पहले, कि योर अपेयरेंस इन द कोर्ट की एक हेडिंग है, कोर्ट अपेयरेंस। कोर्ट अपेयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको तोहफे में मिल जाए। मेरी नज़र में कॉन्फिडेंस सिर्फ तैयारी से आता है और किसी चीज़ से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ मेहनत से आता है वरना किसी चीज़ से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ योर ग्रिप ओवर द क्रिमिनल लॉ एंड योर मास्टरी ओवर द फैक्ट्स से आएगा और किसी चीज़ से नहीं आएगा। यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन द कोर्ट। अपील कोर्ट्स वो कोर्ट्स नहीं है जहां जजेस बुत बन के बैठे हों और आपकी बात ही सुनते रहें। वो कहेंगे छोड़ो इस बात को, हमारे सवाल का जवाब दो। सो मौके पर बात सूझनी चाहिए, मौके पर आमद होनी चाहिए। और फिर अक्सर लॉयर से गलती करते हैं, सर मैं उसका जवाब बाद में दूंगा, पहले तो सिर्फ मेरी सुनो। वो नहीं कर रहे, जज अनॉय हो जाएंगे, जो बनती हुई रिलीफ आपकी झोली में डालनी है नहीं देंगे। First of all, if a judge has a specific categoric question, address that query, that concern first. Satisfy the judge first the concern which he has in his mind rather than आप अपनी सुनाएं। ये मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, ये काम ना करें।
एक सवाल पूछा जाता है, रोक के तहम्मुल से पहले सवाल को अंडरस्टैंड करें और जितना अच्छा जवाब मौके पर सूझता है उतना अच्छा जवाब मौके पर उस बात का दें, और वो तभी दे पाएंगे अगर पूरी फाइल पड़ी होगी तो, क्योंकि वो सवाल कहीं से भी उठ सकता है। 3 ही चीज़ें कहता हूँ और वो तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर वॉइस। माइंड एब्सेंट है, हाजिर नहीं है, तो फौजदारी मुश्किल हो जाती है। इशारे कर रहे हैं, उंगली पॉइंट आउट करेंगे, बॉडी को ठीक नहीं रखा हुआ आपने, डमीनर ठीक नहीं है, यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, कोट का या टाई का आपका कॉलर का बटन खुला हुआ है, या शेव ठीक से नहीं है, या इफ़ यू आर नॉट appearing well groomed, this makes all